class is structure of sperm. I have explained to you about structure of sperm. No, no. Yes, ma'am. Oh, Yes, ma'am. I explained or what? Oh, I thought. Explain, ma'am. Okay, I'll just. Okay then. Okay then. To start with another topic. Okay. Can you say the same? Yes. Can you see the screen, students? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. What is it written? Read out. Human reprodu- A human. human reproductive system and not Okay. now is nervous system. Okay. Okay. Nervous system. So today we'll start with the topic of the nervous system. Okay. So by hearing the word nervous system, what comes to your mind? What is the first thing that comes to your mind? अगर नर्वस सिस्टम के बारे में या नर्वस सिस्टम का नाम सुनने में क्या आ जाता है दिमाग में मतलब what comes to your mind? Nervous and Nerve. Nerves Nerves, ma'am. and anything else? nervous. Nervous. Nervous means it's already written. Nervous. What comes to your mind? Himanshu said nerves. Then anything else? Electricity cable. Electricity cable. Went so far. Okay. Like Aminul, like what? electricity cables nerve system. Like electricity cables. Oh my god. Can you please mute yourself? Okay, thank you. Okay. So by hearing the word nervous system, what comes to your mind? Okay, let me say. The nervous system, they helps you in what? They helps you in knowing the things which are occurring inside your body as well as outside the body, that is outside the environment. Understand? Which means what? Like suppose, say for example, I'll just give you one example, which is that if anything is occurring or if anything is happening inside you. Say for example, suppose say your stomach is like paining, or else you're having a headache, something, or maybe you are feeling like something like vomiting. Okay, so who will inform you? Your brain. It's not it. That is the nervous system. So these are the changes which you will find inside your body. Understand? Inside your body and outside the body. Like for example, say like if somebody hits you from the backside, or if like some changes in the environment. So these are the changes which you will find in the nervous system. I mean, with the help of this nervous system, like you will be able to know what is occurring inside your body as well as outside your body, outside the environment which is occurring. Understand? तो ये नर्वस सिस्टम क्या है? जो हम लोग के अंदर जो बदलाव है, जैसे कि बोलो कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है या फिर वॉमी करने का इच्छा हो रहा है, तो ये मतलब बदलाव है कि नहीं? तो ये बदलाव कैसे पता चल रहा है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग बोलता है, ठीक है? नर्वस सिस्टम की मदद के द्वारा मतलब हम लोग जान सकते हैं कि क्या क्या बदलाव है, ठीक है? और जैसे कि आउटसाइड द बॉडी मतलब बाहर, तो कैसे बाहर में बदलाव दिखाई दे रहा है तुम्हें? जैसे कि बोलो कि पीछे से अगर कोई तुम्हें मारे या फिर कुछ भी हो सकता है कि नहीं? जो बाहर का एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं डिटेक्ट, ठीक है? मतलब तुम समझ रहे हो कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है? मतलब उसको ये जो पहला जो मैंने बोला वो मतलब फर्स्ट पॉइंट है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट
that which I explained just now. That is that you will be able to know the changes within the, I mean, inside your body as well as outside your body. Understand? Okay, so did you understand the first point? Yes, ma'am. Okay. Okay, next is what the nervous system is a part of the body that coordinates its behavior and transmits signals between different body areas. Means what? The nervous system, they will unite with each other. Understand? Means they will coordinate. Coordinate means what? They will work with each other so that they will send signal to the brain. I mean, all the body organs, all the organs which is within you, all are connected with the help of what? With the help of the brain. I mean, if the brain was not there, then your body system, like your organs, your system, whatever system, say for example, digestive system, endocrine system, this all the system, it will be useless. Understand? It will be useless. So, because of this nervous system, there is a brain, uh, means they are controlling everything. Understand? Means within all the different parts of your body. Understand? So they help even what to say? They helps your body to be in coordination. Means they work together. Did you get my point? नर्वस सिस्टम मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, अगर नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन नहीं होने से हम लोग का क्या होगा, मतलब जो सारे काम हम लोग जो रोज करते हैं, ये नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के मदद के वजह से हम लोग कर सकते हैं। ये ब्रेन पूरा शरीर को, पूरा ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मतलब एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करके कहाँ पे मैसेज सेंड करता है, ब्रेन पे यानी कि नर्वस सिस्टम पे सिग्नल वो सब चेंज मतलब सेंड होता है। Okay, did you get my point? Did you understand about this, the first slide, everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay, next is parts of nervous system. So the nervous system has got two parts. So the first one is what? The central nervous system, that is the CNS, which is also known as CNS. And the next one is what? PNS, that is the peripheral nervous system. So let's see now, what do we mean by central nerve? I mean, what is there in the central nervous system? There is a CNS. So in the CNS, there is the brain and the spinal cord. Okay, in the CNS, there is the brain and the spinal cord. So in the picture itself, you just see brain and spinal cord. And next is what? Peripheral nervous system. That is the PNS. So in the PNS, what is there? All the nerves. Okay, all the nerves which are outside the brain in the spinal cord. This is the brain and the spinal cord. It's not it. So in the peripheral nervous system, what will you say? All the nerves which are outside the brain and the spinal cord. Okay. Okay, did you understand? ये जो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, पार्ट्स मतलब नर्वस सिस्टम का दो पार्ट्स है, ठीक है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS है, और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। और दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, जो सारे नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है, ठीक है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। क्या समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम? Yes. Ma'am, please repeat PSN. PSN. PNS. PNS. Peripheral nervous system. Ma'am.
Okay, peripheral Yes, nervous ma'am. system means it consists of all the nerves, okay, which are outside the brain and the spinal cord. Means here brain and spinal cord is there, right? So so the peripheral nervous system, all the brain, all the nerves, okay, all the nerves are there, which are outside the brain and the spinal cord. Spinal cord, brain and the spinal cord is what? Central nervous system, right? So peripheral nervous system means what? Means all the nerves which are outside the brain and the spine. Means it is outside the brain and spinal cord. It's not this nerve. So it is that. ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यानी कि पीएनएस, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर में जो जो नर्व्स है, ठीक है, सिवाय ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो सारे नर्व्स है वो लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, समझ में आया हिमांशु? Yes, ma'am. हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो सारे नर्व्स है, ठीक है, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस। Okay. Okay, okay, next. So again you can see that the nervous system has two main subdivisions, that is the somatic or voluntary component, okay, and the next is what? Automatic or involuntary component. So let's see now what do you mean by somatic or voluntary components and the automatic or involuntary component. तो ये नर्वस सिस्टम का दो सब डिविजन्स है, उन लोगों का नाम क्या है? सोमैटिक और वॉलंटरी कंपोनेंट, और दूसरा नंबर क्या है? ऑटोमेटिक और वॉलंटरी कंपोनेंट। ठीक है, ये जो सब डिविजन है। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय सोमैटिक और वॉलंटरी कंपोनेंट. Voluntary component, what does it mean? Voluntary means which you can control. Understand? Which you can control. For example, I have given some example, that is eating a cake. You can eat a cake whenever you want. You can ride a bicycle. You can walk anytime. Playing piano, coming to school, going to school. All this means which you can do by yourself, which you can control. Understand? It means voluntary. And involuntary or automatic component means what? Which you can't control. For example, I have given some example, heartbeat. Can you control your heartbeat? No. Can you control your breathing? No. Blinking? No. You can't control. All this, it just happens automatically. Understand? Heart means circulatory system. Okay, circulatory systems means digestive system. All these things, salivating, you salivate, means all these things like it just happens automatic. You can't control. So it's known as involuntary. Somatic और voluntary component क्या है? Somatic और voluntary component का मतलब जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, केक खाना, साइकिल चलाना, ठीक है, पैदल जाना, वो सब, ये सब तुम कर सकते हो, मतलब तुम खुद को मतलब कंट्रोल कर सकते हो, है कि नहीं? इसको बोलते हैं वॉलंटरी। नेक्स्ट क्या है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जैसे कि सांस लेना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द सब डिविजन? Yes, ma'am. Okay, next is neurons. So in the nervous system, you will see billions of neurons. Okay, you will see about 100 billion neurons inside the nervous system. तो हमारे शरीर के अंदर nervous system neurons 100 billion देखोगे, मतलब nervous system पे. So this is one among all those neurons. तो ये इनमें से एक है, ठीक है? So let us discuss about neurons. So this is the structure of neuron. So in the neuron you will see dendrites. This is the dendrites. Dendrites are just like branches which comes out from the cell body. This is a cell body. This is the nucleus. Okay, this is dendrites. This is dendrites.
And these neurons, they are also known as what? They are also known as nerve cell. Okay, they are also known as nerve cell. ये न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन में न्यूक्लियस है और जो सेल बॉडी के बाहर ब्रांचेस का जैसा आता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स. बहुत सारा डेंड्राइट्स है. Okay, and this long one, okay, which is coming downside, which is going downside, is known as axon. Okay, it is also known as axon. And you will find that only one axon is there, and you will see many dendrites. Okay, you can see many dendrites, but axon you will see only one. And the neurons, they are also known as nerve cell. And what is the main work of this neuron? The main work of this neuron is that they receive signal from the brain. Okay, they used to receive signal from the brain. तो ये जो न्यूरॉन है उन लोग का क्या क्या काम है? ये लोग सिग्नल मतलब आ जाता है उन लोग को सिग्नल ब्रेन से आ जाता है, मतलब दिमाग से ये दिमाग से मतलब ये मैसेज भेजता है और ये लोग रिसीव करता है. क्या समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay. Okay, next is axon. So this is axon. So you will find that axon, they are long. Okay, they are long, and their structure is just like a tail. Okay, they are just like a tail, and you will see that this axon, they have a fatty substance which is known as what? Myelin sheath. Okay, this picture. So this is the myelin sheath. This is the myelin sheath, and this myelin they helps in what? They helps the axon. Okay, this is the axon. They helps the axon to make what? To make some electrical signal. Okay, means again another neuron is there here. So they will go and pass signal to the another neuron. So the axon, they helps in that. Okay, did you get it? तो ये एक्सॉन लंबा है, ये मतलब पूंछ का जैसा है. और ये एक्सॉन कैसे कवर्ड है? फैटी सब्सटेंस से कवर्ड है. ठीक, इसको बोलते हैं माइलिन शीट. ये जो है इसको बोलते हैं माइलिन शीट. तो ये माइलिन शीट का काम क्या है? माइलिन शीट मतलब इसको मैसेज भेजता है. ठीक है, एक फिर से मतलब दूसरा न्यूरॉन होगा जो मैसेज भेज देगा इसको. ठीक है, समझ में आया? Okay, did you understand everyone about axon? Yes, ma'am. Okay. Okay, next is dendrites. So these are dendrites, all this. So they are like fibrous roots. Okay, fibrous means they are thin. Fibrous का मतलब वो लोग थोड़ा पतला है और वो लोग roots का जैसा है. And they are just like the branches. Okay, in trees also you used to find branches, right? So same way, these dendrites also, they are just like the branches which comes out from the cell, in the cell body, which comes out from the cell body. And these dendrites, they are also just like antenna. You know na antenna? Antenna means what? They used to receive signal. It's not it. Antenna का जैसा है ये लोग. Antenna मतलब क्या है? मतलब ये लोग मैसेज रिसीव करता है, मतलब मैसेज मिलता है उन लोग को. ठीक है, एंटीना मीन्स दैट. ओके, सो ओके, एंड दिस न्यूरॉन्स ना, दे हैव मेनी डेंड्राइट्स. और ये जो न्यूरॉन है मतलब उन लोगों के पास बहुत सारा डेंड्राइट्स है, ये सब चीजें. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट डेंड्राइट्स? Yes, ma'am. Okay. Okay, so now let's see about the function of neurons. So what does the neuron do? So this neuron, I have said, means
one neuron, they are connected to each other neuron. So this neuron again they will get connected to another neuron, and this neuron also again another neuron is there, so that they are connected. मैंने ऑलरेडी बोल दिया था ना कि मतलब न्यूरॉन्स ये लोग कनेक्टेड है, ये एक न्यूरॉन है, फिर से न्यूरॉन, और फिर से नीचे में फिर से अनदर न्यूरॉन होगा, है कि नहीं? ये लोग सब कनेक्टेड है, ऑल दिस न्यूरॉन्स ना, ऑल दिस आर कनेक्टेड। हेलो हाँ मैम, डेंड्राइट कनेक्ट होता है क्या? हाँ हाँ, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, और ये इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, ये मतलब जो न्यूरॉन्स के ठीक नीचे में है, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन टर्मिनल्स और ये जो डेंड्राइट्स है, ये दोनों कनेक्टेड हो गए। So this is neuron, right? So this is the dendrites. So downside you will find axon terminals. Terminals means what? Ending portion. Isn't it? You have your final, you can say like that. So here you will use the word end. Ending. जो last में है उसको बोलते हैं terminals. ठीक है, जो ये axon terminals, it will be connected with another neuron, that is in which part? In the dendrite portion. Understand? So it will be connected in that way. Again here also another neuron, you will see again same thing. Again it will be connected. Again another neuron. Again it's like they will connect with each other. Do you understand? So how they will connect? So now let's see. So this neuron, they will pass information to this neuron. Okay, how they will pass? Through action potential. When they will pass information, it is known as action potential. Understand? Action potential. And when it happens, when they will pass information, it is known as what? It is known as electrical potential or else electric potential. Okay, action potential or else electric potential. And what used to transfer here? Ions. Okay, ions, I-O-N-S, ions. Ions used to be flow of ions used to be present here. तो यहाँ पे क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल, मतलब जब ये दोनों ट्रांसफर होगा, मतलब ये जो पहला न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन जब दूसरा न्यूरॉन को मैसेज भेजेगा या फिर इंफॉर्मेशन भेज देगा, क्या होगा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, नहीं तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ आयंस, मतलब यहाँ पे आयंस मतलब भेज देता है यहाँ से। Okay, and this action potential, you can see that it has got two parts. It is it is known as chemical and electrical synapse. Okay, when they pass information, it is known as it will be of two types. It is chemical and electrical synapse. Understand? And these neurons, they will send signal, and these neurons, they will receive the signal. तो ये जो न्यूरॉन है, ये मतलब ये मैसेज भेजेगा या इंफॉर्मेशन भेजेगा, और ये जो दूसरा न्यूरॉन है, ये मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये मतलब रिसीव करेगा, इसको मैसेज मिलेगा इसको। ठीक है, और हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे दो टाइप का एक्शन पोटेंशियल मिलेगा, एक है केमिकल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। Okay, did you understand till here? Yes, ma'am. Okay. Okay, next is chemical synapse or chemical synapse. So in chemical synapse or chemical synapse, what will you get? You will get that again same thing. Action potential is found here. That is, they will pass signal to each other, and you will find that you will find that here there is much gap. Okay, in between two neurons, that is one neuron and another neuron, you will find much gap. Means gap, the distance between one neuron and the another neuron is a bit big. The distance is a bit large. It's a bit large.
तो यहाँ पे क्या मिलेगा केमिकल सिनेप्स पे, यहाँ पे सेम थिंग एक्शन पोटेंशियल होगा यहाँ पे, मतलब एक दूसरे के तरफ इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, मैसेज भेजेगा। और ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है जो न्यूरॉन के बीच में है, ठीक है, ये गैप थोड़ा ज्यादा होगा, उन लोग का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं सिनेप्स। ओके, इज इट क्लियर अबाउट केमिकल सिनेप्स? Yes, ma'am. Okay, next is electrical synapse or synapse. So this is this one, okay, this blue color one. So in this electrical synapse or synapse, what can you see? You can see that only excitation can be done here. Okay, there is electrical one, electrical excitation or excitement can be done here, and you will find that two neurons, they are connected with each other, two neurons, okay, one neuron and another neuron, they are connected to each other. And compared to chemical synapse, you will find that in the electrical synapse, you will find that the space is a bit less. I mean, the space is like smaller compared to chemical synapse. And in this electrical synapse, you will find that ions are also being here, I mean present here, ions, which will give the positive electrical signal. Okay, in between the two neurons, they will give positive electrical signal each other. So electrical synapse में क्या देखने को मिलेगा? ये लोग सिर्फ एक्साइटेशन करता है, एक्साइट करता है, और हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे दो न्यूरॉन्स मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, थोड़ा मतलब कम होगा कंपेयर टू ये वाला, कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आयन चैनल्स है, यहाँ पे आयंस, पॉजिटिव आयंस यहाँ पे मिलता है हम लोग को, ठीक है, ये लोग भेज देता है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स? Yes. मैम हाँ मैम इलेक्ट्रिकल सीमेंट का गैप केमिकल सीमेंट से कम होगा क्या? हाँ हाँ, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेशन होता है, ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में ना बहुत सारा एक्साइटेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव आयंस होता है, तो इसकी वजह से एक्साइटेशन भी बढ़ जाएगा। Because of the positive ions which is present in both the neurons, the gap also like it will be less compared to chemical. Understand? Did you understand, everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, next is types of neurons. So in neurons also you'll find three types, that is sensory, motor and interneurons. Okay, so neurons में हम लोग को तीन types मिलेगा, एक है sensory, motor, interneuron. So now let us see what do you mean by all this. Okay, so sensory neurons, sensory neurons, they helps even what? They helps even tasting. I mean, if the taste is good, like you are able to know the taste, it's not it, so you can taste it. Understand? Next is smell. With the help of the sensory neurons, like you can smell things. With the help of sensory neurons, you can hear things. With the help of sensory neurons, you can see things, and with the help of sensory neurons, you can feel things around. Whatever is happening, like you can feel. तो sensory neurons उन लोगों का काम क्या है? टेस्ट, मतलब अगर तुम कुछ खा रहे हो तो मीठा, खट्टा, ये सब पता चलता है कि नहीं? तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद की वजह से हम लोग फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मेल, मतलब तुम सूंघ सकते हो कि अच्छा है या बुरा
स्मेल है, हियर मतलब तुम सुन सकते हो सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से, सी मतलब तुम देख सकते हो सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से, फील थिंग्स मतलब तुम महसूस कर सकते हो तुम्हारे पास में अगल अगल बगल में क्या हो रहा है कि नहीं? So the sensory neurons is about this. Okay, is it clear about sensory neurons? Hmm. Okay, so I will discuss till here for today's class, sensory neurons. In the next class, we will continue with motor neurons, okay, interneurons and brain. Okay, so far is it clear everyone? Till sensory neurons. सब लोग कुछ सवाल पूछना है? हाँ? Okay then, हाँ? मैम एक न्यूरॉन का साइज कितना होगा, मतलब एक न्यूरॉन का साइज ये लोग एक्चुअली बहुत छोटा है, ठीक है, सो वी कांट से लाइक what to say, we can't say the exact size about it because all these are like very small in size. Understand? यस मैम, यस। हेलो मैम। हम्म मैम मेरा प्रेजेंट रोल नंबर नहीं दे सक रहा, नहीं जा रहा है। wait, I will see today. Okay, Abhijit Shivam ना? यस, Okay. 76 मैम, 076। Okay, 76. Okay. Okay. Okay, Himanshu, you were saying something, right, regarding about the size of neuron? यस यस। Yeah, they are about what to say, 100 microns. Okay, 100 microns. 100 Yeah, so but it is very small, but very small. It is 0.1 millimeter. 0.1 millimeter. मैम सब न्यूरॉन का साइज बराबर होता है क्या, छोटा बड़ा ऐसे ऐसा ही होता है? होगा, ऐसा ही होगा, सब एक समान. ओके मैम। Okay. Okay then, that's all for today's class.